Namaskar, Har Har Mahadev. Welcome to live. Hello, Divine Angel. Namaskar. Yeah, I'm good. How are you? Krishna ke jyoti alokik, tilak mein chai rahi. Okay, Flower Beauty. Hi, how are you? Okay, Divine Angel. I couldn't remember you. I think it's very long. Okay, what's coming towards Sabana? Okay, you are Sabana. Fine. Okay, and Flower Beauty. May I put a question? Yes, sure. I will take one question that was pending for a long time. Definitely. Give a minute. Okay. Yeah, definitely. I will take your questions. Give me a minute. Let me open the decks. Why don't you start memberships? I think there are some criterias or whatever. Maybe I haven't looked much into that, but definitely I will start with it. I had not been coming to this live for quite a long time. It's can you guys hear me? Am I audible properly? So what I will do today is like I will do this angel reading. Then the deck which I will be using is this tarot, tarot of divine, and the normal classic which I use light seers tarot. And in case if you need guidance, yeah, I will do. Okay, fine. Sure, I will think about that. Flower Beauty. It's a very good suggestion. Let me take up the questions. What's coming towards Sabana? Okay, so just close your eyes for a moment. Just think about the question.
One second. Okay, what is coming towards Sabana? Okay, guys, please do like this. So if I see the questions, the first is this Queen of Wands, which is reverse, which does indicate that things are not being very good in your case. Like there had been some scenarios where you might be feeling a little jealous. There has been bit of hesitation, like you might be thinking, but you are stopped by being by some kind of hesitation, or at the same time, like you might be feeling like you are losing your power. You need to build your self confidence. This is what this card is saying. Uh, leave about jealousy, leave about hesitation. You need to be more self confident, and at the same time, you need not think what others are thinking about you. Now, this second card, which also indicates Two of Cup in reverse, which shows that somehow, in term of relationship, things are not happening in the way that you had been thinking. Like there could be some kind of misunderstanding if you had been in some kind of relationship, uh, or it could be like there are some kind of emotional blocks. You need to open up more. There could be some kind of trauma, and there could be some separation. Okay, so which can be indicated. These are the things. And finally, what I see for you is that you need to stop from some kind of addiction, or there could be situation that someone might control you. So you need not get into some kind of addiction or bad habits, or maybe in the wrong company of people, because you have the devil card, which which is not much very positive. Some kind of addiction. Okay, so that is for you, Shabana. Is some kind of situation in. So, Sabana, are you there? Did you observe similar kind of situations? नीलिमा जय श्री राम. ऐसे सिचुएशन हो रहा था ना आपके लाइफ में. सो द एडवाइस फॉर यू विच आई विल गिव इज दैट try, you need to break free from addiction, and you need to observe any pattern where any person could be controlling your life. This is the devil card, which does signify some negativity, negative addiction, or negative people can enter in your life. So be careful about whoever enters into your life in this moment. Yeah. Flower beauty, yes, you can ask your question. So these are the cards for this divine angel. Okay. Okay, no one is controlling, but you need to be cautious, because that is something which is coming in future. Okay. Okay, Victoria Raymond. Flower beauty question: what should I do to have a stable, committed relationship with someone capable? What should do? What you should do to have a stable, committed relationship?
Okay, peacock, flower beauty, just close your eyes and do dhyan of Hanumanji and just think about the question, the guidance, so that you get the right guidance. Okay. 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 So first of all, you need to release your ego because this is the energy which is blocked. Maybe or maybe you're attracting some person who is kind of more controlling, so this is what you're attracting. Your focus is to have a person who is powerful, but at the same time you are attracting some kind of very dominating egoistic person. So this is what I see. What is, you are blocked by some kind of procrastination, so you need to take some action. You need to transform your life. You need to change your thoughts or belief. Okay, in some way you need to thought your present whatever belief is that your thought process, you need to think in a different perspective, and you need to remove any sort of confusion. Maybe there are some kind of confusion which is there. Okay. You are blocked by procrastination, so maybe don't delay things. Okay, do not delay things. Do not think that okay, I will do this at some point of time or at the next time. So if you think that there is something, then do it immediately. Don't keep it for the last moment. Maybe you are not committal, like you are not committing. You need to learn from your past mistakes. These are some of the things, and you might be planning things but you are not putting them into action. Okay, so please take a note of that and start working on this thing. Do not make any unfair advantage or make things in a fair manner. That is the thing I will advise. Do not use any unfair means for anything. If you use fairness, then only things will be helpful for you. Then only you can move forward. Okay. So that was for flower beauty. Now the next question is for Sana Singh. सर मेरे बॉयफ्रेंड बलजीत के साथ अगेन आफ्टर 2 years सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, तो क्या मैं उसे शादी होना पॉसिबल है? ओके, आई थिंक यू हैड बीन आस्किंग अबाउट सेम गाइड, लाइक आई रिमेंबर इन 2022 आप ये चीज़ पूछे थे. मैंने तभी रिप्लाई भी किया था that you need to be a bit considerate about him. Let me check. आपकी उसके साथ शादी होना पॉसिबल है क्या?
Yes, there is a possibility. Uh, the first thing I see is like a this Fool card, so there could be new beginning with him, but then it has to be like both way exchange of frequencies. Okay, it should not be only give क्योंकि आपके लिए दोनों कार्ड सेम पैटर्न का है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा. You also have to seek एंड फाइंड व्हाट ही नीड्स. आपको ये देखना है कि उसका नीड क्या है, क्या उसका नीड मैं फुलफिल कर रही हूँ, एम आई गिविंग हिम एनफ. ऐसा नहीं कि दैट यू आर ओनली टेकिंग 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 फ्रॉम हिम, यू ऑल्सो हैव टू गिव मोर टू हिम. ये कार्ड भी दिखा रहा है विच सोज देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी इम्बैलेंस, दैट मे बी आइदर समवन इज गिविंग टू मच और समवन इज टेकिंग टू मच. तो वो चीज़ अगर आप अवॉइड करोगे या फिर यू मेक सम काइंड ऑफ थिंग, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू. तो फिर एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा. ठीक है, ही माइट थिंक टू मैरी, सो दैट कुड बी प्लान ऑफ ए न्यू बिगिनिंग. तो पॉजिटिव है. नीलिमा, क्या मुझे 20 जून रेलवे एग्ज़ाम देना चाहिए? सक्सेस चांसेस. देखो अभी आई एम गेटिंग दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल विच इज़ रिवर्स. इन सम वे दिस इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव कार्ड. तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी दिखा रहा है दैट you might feel not very positive, so I don't get a positive answer for this. Okay, अभी के लिए ये पॉजिटिव नहीं है डिलेमा. Okay, so there is someone, Victoria Raymond. Can you tell me how the cancer man in my life feels about me? Are you still there, Victoria? Okay, if Victoria is there, then she will listen. Can you tell me how the cancer man in my life feels about me? Somehow he is blocked by doubts. कहीं ना कहीं ट्रस्ट वाला फैक्टर है. आई डू सी दैट ही इज नॉट ट्रस्टिंग. Okay, Victoria, yeah, here there is a problem with trust. And he is clinging on to whatever is thought, like he is not able to get away from his past, so he is still worried, and he is thinking about the past, whatever has happened in the past, and he is not letting it go. That's the problem. Now again, the second card also shows that he is very much materialistic. He needs to balance his life. He is obsessed with too much of with materialism. He needs more material thing. He is looking more from the wealth point of view, about obsessed about the rich. He is overindulged, and he needs to balance material and spiritual. Maybe it also significant shows that there is a significant point that he is too much workaholic, or he is obsessed about rich. He wants to be more rich, and he is doing things how he can earn more money. That's what. सोना सिंह, बता दिया आपको ऑलरेडी, राइट? सोना सिंह, योर क्वेश्चन इज ऑलरेडी आंसर्ड. मैंने ये बोल दिया है कि आपके लिए एक नया बिगिनिंग बनेगा, लेकिन आपको बोथ वे एक्सचेंज करना पड़ेगा. एक्सचेंज ऑफ इमोशंस हो या एक्सचेंज ऑफ व्हाट यू से, whatever you give you should also receive, और whatever you receive you should also give. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लेते रहो एंड या फिर वो आपको देते रहे एंड यू डोंट गिव एनीथिंग. इफ he is giving his love or his emotions, you should also return back.
ठीक है, बट देयर इज अ न्यू बिगिनिंग. ओके, सोना सिंह, your question is answered. Okay. पॉसिबल तो है शादी का. And then one day, someone walks into your life. Okay. So few thoughts. Let me share about my opinion or my feeling. People had been giving so much of reactions and बहुत मेनी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, उनको ये लग रहा है कि ठीक है हमने ये प्रेडिक्ट कर दिया अबाउट द एक्सीडेंट या फिर विमान एक्सीडेंट. इट्स नॉट अ गुड वे कि ये दिखाना कि ठीक है मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट हो गया या फिर आई हैड एक्चुअली प्रेडिक्टेड. अगर ये प्रेडिक्ट किया था तो फिर यू शुड हैव बीन वॉइसिफरस. आप एकदम लग जाना था ना. वाई यू डाउटेड, या फिर आप खुद को डाउट क्यों किए कि नहीं ये मेरा प्रेडिक्शन था और मैंने किया था. आप तभी एकदम ये करना था ना लाउडली. यू शुड हैव साउटेड लाउड कि ये फ्लाइट में नहीं जाना चाहिए. इफ़ दिस थिंग हैज़ हैपेंड देन एक्सीडेंट इतना 42 लोगों का डेथ भी हो सकता है. यू शुड स्टॉप दिस फ्लाइट. ऑल्दो आई नो दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट एंड ऑल दोज थिंग. लेकिन जब ये डिफ़िकल्ट चीज़ रहता है कि पिन पॉइंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पिन पॉइंट एनी पर्टिकुलर फ्लाइट दैट दिस इज द फ्लाइट विच इज़ गोइंग टू हैव ए क्रैश और दिस काइंड ऑफ थिंग. तो फिर ये इतना सैड सिचुएशन होने के बाद वाई आर यू ऑल, या फिर जो भी लोग हैं, वाई इज़ एवरी वन हाईलाइटिंग दिस थिंग कि ये मेरा प्रेडिक्शन था और ये करेक्ट हो गया. एंड इतना खुशी के साथ ये दिस इज़ नॉट अ थिंक ऑफ मैटर ऑफ हैप्पीनेस. मान लीजिए आपने अगर इलेक्शन प्रेडिक्ट किया होता या फिर यू हैड प्रेडिक्टेड कि दैट ओके दिस पर्सन हैज़ वॉन द लॉटरी या फिर इस पर मैंने किया था जॉब लग गया, देन दैट इज़ अ थिंक ऑफ हैप्पीनेस, राइट. बट प्लेन क्रैश हो गया, दैट टू यू हैड किड्स, यू हैड ओल्डर पेरेंट्स, लोगों के पेरेंट्स हैं. इट्स अ सैड थिंग. और आप एकदम खुश होकर ये कर रहे हो, दिखा रहे हो कि ठीक है ये मैंने प्रेडिक्ट किया था और हो गया विथ ऑल दिस थिंग्स. दिस इज द वन विच आई एम सीइंग. कल छठा महीना था और 6 और 3 को जोड़ा जाए तो 9 बनता है. 2025 को जोड़ा जाए तो 9 बनता है. 9 और 9 को जोड़ा जाए तो 9. देव गुरु बृहस्पति अतिचारी, तो ये तो होना ही था. 1 और 2 3 हो गया. जून छठा महीना हो गया. 6 और 12 तारीख थी. 2 और 1 को जोड़ा जाए 3 बनता है. कल छठा महीना था और 6 और 3 को जोड़ा जाए तो 9 बनता है. 2025 को जोड़ा जाए तो 9 बनता है. 9 और 9 को जोड़ा जाए तो 9. देव गुरु बृहस्पति अतिचारी, तो ये तो होना ही था. 1 और ठीक है. सो मैं ये बोल रहा था कि अच्छा मुझे इतना जानना है. देखो हाँ, मैंने बोला ना कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स होगा, तो आपको अगर आप अपने में कुछ चेंजेस करते हो एज एन कि आप उनको भी उतना दे रहे हो जितना वो आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं. सो इट हैज़ टू बी बोथ वेज थिंग्स. ठीक है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सना सिंह, सोना, पॉसिबिलिटी है. ठीक है. देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी की होगा, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा. यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग. अब बिना बैलेंस किए नहीं होगा. ओके, थैंक यू. सोना सिंह, मैंने रिपीट बहुत बार अभी तक हिंदी में ही बोला कि पॉसिबिलिटी है.
राइट? मे बी आर यू एबल टू हियर मी, या फिर येस और नो? कैन यू हियर मी, येस और नो सोना सिंह? देखो, क्योंकि मेरे लिए भी ये डिफ़िकल्ट है सेम चीज़ को बार बार ऑलमोस्ट मल्टीपल बार ये सेम चीज़ को रिपीट करना. इट इज़ नॉट अ गुड वे, राइट? इफ़ यू आर नॉट एबल टू हियर देन यू मैसेज मी दैट यू आर नॉट एबल टू हियर. आप मेरी बात को सुन पा रहे हो कि नहीं साना सिंह? येस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी. हाँ, पॉसिबिलिटी है आप दोनों का. ठीक है. रुपए का नाम ही नहीं ले रही थी और मुझे जाना था वो करना जो 40 किलोमीटर दूर था, पर लग रहा था जैसे सपना है. गाड़ियां रुक गई थी, रास्ते बंद हो गए थे और मैं सोच रहा था अब क्या. फिर किसी ने बोला एक रास्ता है समुंदर का, मेरी राइड से जा सकते हो, वो करना सिर्फ 10 रुपए में. दिल में डर था, मेरी हिल रही थी लहरों के बीच में. सोना सिंह, क्या आपको सुनाई दे रहा है? आर यू एबल टू हियर?